Okay. So, today I'm explaining you the chapter. The story's name is Chief Ki Dawat. Chief Ki Dawat means the party to a chief of a company, and the story is written by Bhishma Sahani. The writer name is Bhishma Sahani. So here it is given that I'll explain you later. First, I want to start the story. So the story is आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। So at Mr. Shamnath's house there was a party for his chief, the chief of the company. He was having the party for him. श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी मीन्स हिज वाइफ को पसीना मीन्स स्वेटिंग, पोंछने की भी फुर्सत नहीं। फुर्सत मीन्स द फ्री टाइम। दे वर नॉट इवन हैविंग द फ्री टाइम टू वाइप देयर स्वेट, दैट मच दे वर बिजी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलझे हुए बालों का जोड़ा बनाए। पत्नी वाज वेयरिंग द नाइट गाउन। उलझे हुए बालों का, उलझे मीन्स विदाउट कॉम्बिंग द हेयर्स। She has just made a jura, means that round and back side we will tie up our hat that we call jura. मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, and she has lot of done the foundation. और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए, and Mr. Shamnath was doing the smoke cigarette one after another. चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे, and holding the list of the things which has with the things and that whatever has to be done in the party, that list of those items. एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे, and he was going from one room to another room, going and coming. आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी, मीन्स once the time is about to reach 5 o'clock, so the all the preparation was about to finish, means it was looking like yes, we are done with the preparation. कुर्सियां मेज सिपाहियां नैपकिन फूल सब बरामदे में पहुंच गए। एवरीथिंग, बरामदा मीन्स द कॉरिडोर, देयर इज अ एरिया of our house, middle part of our house. So there was the party was to be they were going to keep the party. So kursiyan, chairs, means that table. Sipaiya means that stools which is having three legs, that's stools. Napkin, full napkins, tissue papers, फूल, फ्लावर सब बरामदे में, एवरीथिंग वाज रीच्ड इन द बरामदा। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया था। ड्रिंक, द अरेंजमेंट ऑफ द ड्रिंक इज दैट वी आर ड्रिंकिंग, दैट अरेंजमेंट वाज डन इन द बैठक। बैठक मींस द ड्राइंग रूम वेयर वी अटेंड आवर गेस्ट, दैट रूम वी कॉल बैठक। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगा। एंड वेस्ट सामान, द फालतू सामान मीन्स द वेस्ट थिंग्स of the house was hidden in the backside of the almirahs and below the bed. तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? सहसा, suddenly one problem came in front of Shamnath. What will happen of mom? Means they were thinking what we will do of mom. इस बात की ओर न उनका और न ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। About mom, they didn't even think about. He also did not think, and his so-called so much talented housewife, she also did not notice this part. Mr. Shamnath श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले। Mr. Shamnath, he turned towards his wife and he told in English, माँ का क्या होगा? What will happen after mom? श्रीमती काम करते करते थक गई। Doing the work, she stopped. और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, एंड आफ्टर थिंकिंग लिटिल बिट शी स्पोक, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। बैक साइड देयर इज अ हाउस, हिज हर फ्रेंड इज देयर, वी शुड सेंड हिम टू द फ्रेंड हाउस। रात भर बेशक शी शुड बी लिव देयर ओनली, कल आ जाए, एंड लेट हर कम टुमारो। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिला के बोले,
means he kept the cigarette in the mouth. Sikudi means the shrink, like this. The shrink, small eyes. He made his her eyes little smaller, and he saw Srimati's face, and पल भर सोचते रहे, like little for a minute, for a second he think, and फिर हिला के बोले, then by shaking, nodding his head, he told, नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का आना जाना फिर से यहाँ शुरू हो जाए. Means no, I don't want that another old lady uh, should come again, and again should start to come to our house. Means that his mother's friend, she also, mother is a old age lady, so the friend also will be a old age only, no? So they don't want that friend will again start coming. पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था. Means before also they have stopped their meeting, both the friends meeting. Anyhow they stopped. वहां से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं. So we will tell to mom like जल्दी ही खाना खा के soon she should finish her food. शाम को ही अपनी कोठरी में, and she should go to her room in the evening only. Before the party starts, she should go to her room only. They don't want to show their mother to the guest. ओके, सो शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए. मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निबट लें. सो द मेहमान मीन्स द गेस्ट विल कम अराउंड 8 o'clock. So before that only she should finish all her work. Kotri is a very kotri actually generally it's a very small room, and where we will keep all our waste things of the full house, or like the things which we are using once in a year. That kind of smell, like suppose the drum of that 100 kg wheat will be there. They will, it's like a stock we will keep, sometimes the waste part, something. So kotri is that kind of room, and if they are telling the mom should go to the kotri, means they have given a small kotri to live with their mom. Means they have not given a proper room also, they have given a small kotri to her, and they are telling she should go to her kotri before the food starts. That only they are telling. Means that much insulting way, that much this much importance they are giving to their mom. Okay, so सुझाव ठीक था. सुझाव मीन्स द आइडिया, इट वाज अ गुड आइडिया. दोनों को पसंद आए, दे बोथ लाइक इट. मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी. बट सडनली द श्रीमती टोल्ड, जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी. और इफ शी विल स्लीप, एंड इन द स्लीप इफ शी विल स्टार्ट स्नोरिंग, देन साथ ही तो बरामदा है, एंड द कॉरिडोर इज नेक्स्ट टू द कोठरी ओनली. जहां लोग खाना खाएंगे, देयर ओनली द पीपल विल हैव द फूड. तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें. सो द Shamnath is saying, so we will tell her that she should lock the door from inside. मैं बाहर से ताला लगा दूंगा. I will lock the room from outside. और यह माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोई नहीं. और I will tell to the mom that after going inside, don't sleep, बैठी रहें, keep sitting. और क्या? Then what? Like that they are discussing. और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक. और if suddenly if by mistake she will sleep, then we don't know no that dinner will be finished till 8 o'clock or not. If dinner का क्या पता कब तक चले, till what time the dinner will be there. If might be she will sleep, then 11 बजे तक तो तुम drink ही करते रहते हो, and till 11 o'clock you are keeping on your drinking part only. So when the people will come for, okay. शमशान नाथ कुछ खींच उठे, and the शमशान नाथ became some irritated. हाथ झटकते हुए बोले, he has done his like hand like this, like that he is going. अच्छी वाली ये भाई के पास जा रही थी. Means it was very good, she was going to the brother. Means Shamshan's brother, that mother was going. तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी, and but you only for becoming great, you interrupted in middle. बीच में टांग अड़ा दी means to interrupt in the middle. So अच्छी वाली she was going to the brother's house, but you only for being I am so great, I am taking care of my mother-in-law like this, that, so you just interrupted in middle, and now she is with us, and now we have to think about her. Like that Shamshan is little irritated. Okay, so this part, the next part I will continue in the next one. Next part I'll continue.